the farmers, whether it is rural prosperity, whether it is going to have agriculture and allied industries being set up in rural areas, and whether it is going to be farmers getting better and more loan with interest subvention, not just farmers, fishermen, and also dairy, meaning animal husbandry. So the picture for rural development and the picture for supporting agriculture is across the board, and that has been narrated. The second thing which I would want to highlight is the continued emphasis that we're giving since vote on account budget, July budget, and now on the MSMEs. Whether it is giving them sovereign guaranteed loan, whether it is support during COVID, whether the definition being changed now for better, more inclusive growth in MSMEs, access to bank credit. So MSMEs have also been given greater emphasis. Together with this, I'd like to highlight the point that energy security has had greater attention in this budget. We've highlighted in July budget how even pump storage will have greater attention. Solar and wind and renewable energy has also been taking consistently good importance in our budgets. This time we are talking about the small modular reactors. I've also announced that there shall be 2 amendments, one to the Atomic Energy Act and the other one for the civil liability. All of this is going to help us attain energy security. Insurance sector's FDI limits have been enhanced. That is another important announcement. I'll end my opening statement with 2 things. There is no reduction in the public spending on capital expenditure. Let's put that up front. We continue to place emphasis on the multiplier effect that capital expenditure done by government has shown, has sustained us. We continue on that. And with all this, our fiscal prudence has aligned itself to the glide path that we announced in 2020-21. So we've kept ourselves in alignment. Fiscal prudence has been maintained. And the next year, coming years, estimate is also been given. Well under 4.5 is what we had said earlier. We are also projecting the same. So this is just as an opening statement. There's a lot more to say, but as you all ask questions, so shall we answer. Thank you. Thank you, ma'am. 225. 225. Mic, please. Ma'am, this is Shrimi Chaudhary from NDTV Profit. I just wanted to understand, ma'am, here. Ma'am, you said the new income tax bill will come next week. Will that be in the form of draft, and where you are also going to take stakeholder comments on that? Yes, as a bill, any bill goes to the standing committee, and the standing committee will of course consult with so many stakeholders, and then it will come back to us, and if necessary, any more amendments if need to be brought in, we'll bring it in and take it forward in the House. So do we expect implementation in this in the fiscal year in FY26? Do you expect what? Do we expect the implementation of? Well, let it get passed. I hope it will get passed without much of a difficulty, but it is only after its passing. Sure. Thank you. 35. Front. Ma'am, Timsi Jaipuria this side from CNBC TV 18. As you said, this is a very responsive government, which is why government decided to give these tax rebates. But given the structure that you have announced, ma'am, up to 12 lakh is the rebate. Any reason why this rebate has been hiked from 7 to 12 lakh? Is it that the incomes or salaries were not growing up to the mark, which is why government thought that this rebate needs to be given? And also, how do you make up for this 1 lakh crore of revenue loss? Will it not impact the budget estimates? Where will you get this money from? Well, Tipsy, I think the first question is, you said that this, when the incomes are not growing.
This is an income tax. Only when there is an income, then we are talking of the tax. So income has to grow to the level to discuss about the tax. Now, why from 7 to 12 lakh? It is something like, it was earlier 2.2 lakhs. When 2014, it became 2.5 lakh. Nobody is going to pay tax. Then there was a 2019 that, we said 5 lakhs, nobody is going to pay tax. Then we said it was raised to 7 lakhs. And now it's being raised to 12 lakhs. So this is a perception that the government feels that, on the average 1 lakh per month, if you have, then you need not pay tax, which means that, we are doing it in two ways. One is we are reducing the slab rates. We are expanding the slabs. If you would have noticed, the slabs are now 0 to 4 to the uniform slabs, and there is a gradualism. There was a thing when we had earlier 20%, then it was jumping to 30%. Now it is 20, we have introduced 25 also. So it's a gradual thing which has been done. Now this benefits every one of the taxpayers, because whatever benefits which has come from the slabs gets transmitted across. So therefore everyone gets a benefit. Now the second part, FM decided that, well, some people should get a little more benefit than merely slab rate reduction could have given. And so therefore an extra rebate. So slab rate reduction for everyone, and extra rebate for 7 lakhs were already getting it, now 7 to 5 lakhs more people have been added. So this is the philosophy behind it. And as you said, why you do it, I think we expect that all that money which they gave, it comes back to the economy in either consumption, savings or investments, in whatever way they choose to do. I just want to add to that. If you compare what we've done today with what prevailed in 2014 under the Congress government, what we are, most often the narrative is we should put money back in the hands of the people. I want to please give this comparison for your consideration. If you compare it with the 2014 tax rates under the Congress, for somebody who's earning 8 lakhs, nearly 1 lakh more money is in their pockets today because of the amendments that we brought in. Meaning, 1 lakh income tax in 2014 is 0 income tax now. So that money is going back to the people in their hands for those who are earning 8 lakhs. For those earning 12 lakhs, 2 lakh was the income tax in 2014 versus today 0 which is proposed. Meaning nearly 2 lakh more money in the pockets of people who are earning 12 lakh. Alright, did I stop it there? As Finance Secretary rightly said, across the board everybody is getting benefit because the rates have also been brought down. Not just the rebates being given to up to 12 lakhs. Rates for everybody is being brought down. As a result, take somebody who earns 24 lakhs in a year. The income tax on them in 2014 was 5.6 lakhs. 2014. For them, now it is only 3 lakhs. The rate change has benefited somebody who earns 24 lakh as well. So 2.6 lakh rupees more in the pocket of people who are earning 24 lakh. So it is not just those who are up to 12 lakh because they are not paying any tax at all, because rebate is given to make up for the tax amount which they have to pay. It is not just up to 12 lakh. Even for others, benefit is accruing, and compared to what it was in 14, that much amount of money is going back to those respective money earners. Just compare it with 24 tax rates, which is prevailing now, and what is being proposed. I would like to draw the comparison. 8 lakh people, meaning those who are earning 8 lakhs. 30,000 rupees more is being put back into their pockets, meaning they would be paying 30,000 in the prevailing tax, 8 lakh salaried wale. Now they pay 0 in the new proposal. Similarly, 12 lakh salary or income wale would have 80,000 rupees tax to pay in the current prevailing taxation rates. They would have 80,000 rupees now go back to their pockets. They don't have to pay that tax. Go to the 24 lakh and compare with the present rates.
present prevailing rate, they have to pay 4.1 lakh rupees as tax. We are saying now they will have 1.10 lakh in their pockets, which they don't have to pay as tax. So we have put good substantial amounts into the pockets of people who deserve to get that, and I would want that to be highlighted compared to what prevailed in 14 and what prevails just this year. 3. Three number. Ma'am, many congratulations. Something that has been quoted to you as well as the Prime Minister, and yesterday the Chief Economic Advisor hinted, in terms of disinvestment and where you should not get into, government. You yourself have been talking from 2020, 21 and subsequently, government should be in less spaces. Has it been a strategy? Because I know you're committed to it, but last budget you didn't refer to it. This budget you have not referred to it. The target still remains there. Is there any impetus that you're going to do towards what has already been announced by the budget? For example, bank privatization of banks and others. That's one. And the second, because that was unanswered, you're making it simpler, the income tax. And bringing a thing, does this mean that you can now not necessarily all the time you can do it through a schedule or an executive order if you want to give some relief to a common man in the new income tax bill that you bring in? No, giving relief any time will have to go to the Parliament, because if we are giving fiscal relief to people, it has to have approval from the Parliament. So but what the tax simplification really means is the complication in the language, the circuitous way in which they were explaining things, and adding too many exemptions. You will realize that when we brought in the new tax regime, we didn't want the old tax regime imitated or copied. In that, there are several exemptions given in the old regime. In the new, we didn't want to give any, because we wanted a simple, straightforward tax regime in which the rates can be brought down. That's what we've done even now. So the act itself had to be simplified. The attempt now is that. Okay. And on the disinvestment and... No, all that will continue. There won't be a relenting on any of this. On disinvestment, ma'am, if I can add, you see, the last time July also the similar questions were asked. We have actually since then a value creation strategy, which was actually well explained at that time also. There is no disinvestment target per se. Disinvestment and dividend are both looked at together, because both are money and money is fungible. And it has got 5 elements. आसंतु पिला दिनर हजिला स्वाद को चाखिबा, जोररु माछ धरी घसिनिया पड़िबा। आळ छतुरे सिमेई देई करंतु कटलेट, पाटी को मोसमोस। रसा तो आपण विभिन्न प्रकार करिथिबे, केबे मुढी रे नडिया रस। In agriculture, it has certainly looked at rural prosperity, focuses on urban development, particularly looking at urban workers, and continues to lay emphasis on reforms. 6 specified sectors have been identified, and I spoke about it in the budget. Sectors in which we will continue our reform agenda. All this, even as we have continuously been engaged with the stakeholders, and interest of education and health has been prioritized. When we're talking about education, from a child in a daycare center, portion for women, lactating mothers, till the level of getting skilling done, and also for artificial intelligence and digital reading material for students in school and colleges. Every aspect of education and
bringing in that dimension which is so critical for health, daycare, cancer centers, and making sure more medical seats are available. These are kind of things with which I'm trying to highlight. The approach in this budget has been pointed on areas which definitely need immediate intervention, outlays, and action along with the states. So, Vikasit Bharat is not just being described. I've given you also what we mean by Vikasit Bharat, or what is it that we expect to achieve for Vikasit Bharat. So this budget actually has given you several things on which you can understand how this economy is being planned to take forward a route towards Vikasit Bharat. Secretaries have joined me. All of them would also come in to explain or answer and give clarity and so on. But one thing which I certainly would like to highlight is वर्षा गत काली जो भाव प्रधानमंत्री कहते महालक्ष्मी पाखे मु मिडिल क्लास को डाकी ये इशारा इंगित दे कि बड़ आसवा जाऊँ जहाँ आसला भी जो आशा थिला जे 10 लाख ताकू पार कर 12 लाख पर्यंत कोठना कोठी टैक्स रे रिहाती आश्वस्ति आपको आप केमिति देखुंट ये साधारण लोकों को बजेट की श्रीयुक्त संदीप मिश्र मत शुणी पार्टी ओके आम आपको देखाऊँ जे बजेट रु कौन कौन आशा था बजेट आसवा पर साधारण लोकटे दुर्गा माधव आपको पचारूथिबे अनेक लोक अरे सस्ता कौन है एवं जदि देखा तबरे सस्ता कौन है टीवी स्क्रीन देखाऊँ मोबाइल फोन इलेक्ट्रिकल व्हीकल बा ईवी कार कैंसर औषध जो जार ट्रिटमेंट खूब व्ययबहुल पाखापाखि 36 प्रकार औषध सस्ता होगा जाऊँगी टीवी एलईडी टीवी सस्ता लिथियम बैटरी सस्ता लेदर जनित कौन जिनस सस्ता दुर्गा माधव आलोचना का बढ़ेगा निश्चित भाव में आम सहित तपन चांद रही बीजेपी रु ये गोटे कथा आसित चांद जानवा चाहिए जो भाव में कहुचे माने 12 लाख पर्यंत टैक्स फ्री किंतु ये जो 12 लाख पर्यंत टैक्स फ्री करा ये गोटे साधारण लोक मन भी प्रश्न आसूची जे इनकम जार से अच्छी से ठीक अच्छी किंतु एमिति बजेट रे योजना रही कि जो मानकर इनकम नाही तांकु मध्य से लेवल पर्यंत नवाई जो माने निम्न मध्यवित्त रही कि निम्न श्रेणी रही से किसी योजना करा कि बजेट माने साधारण लोकों पर योजना निजुक्तिर सुजोग ओके जो बजेट एतरे आपण गोटे जिनिस देख पारिबे जे विकसित भारत सहित जीरो पॉवर्टी को प्रथम थर पाए उठिया जाइए तेणु जीरो पॉवर्टी जदि आमको विकसित ओडिशा कि विकसित भारत सहित करने को हम ताले जो मैंने पॉवर्टी लाइन तलू अच्छा आप जो विषय कहते इनकम एक बढ़ावा को हम तो सहीटा सबुठ बड़ योजना जे विकसित भारत और विकसित ओडिशा सहित जो रखा जाए जीरो पॉवर्टी लाइन नेक्स्ट 10 ईयर भितर से कंडीशन इकोनॉमिक कंडीशन इम्प्रूव होकर से पॉवर्टी लाइन ऊपर को जीवे तेणु से जो वर्ग लोक अच्छा से सबुठ बड़ जिनस से पॉवर्टी लाइन ऊपर को निजी सेटा निश्चित भाव में करा कारण से विकसित ओडिशा और विकसित भारत सहित से गोटे लक्ष्य जो मोदी ग्यारंटी रही तेणु से गोटे बड़ भाव लाभान्वित हे ये आप देखिले बर्तमान टेलीविजन मुझे देखुली आपड़ भी देखुले जे सबू साधारण लोक मैंने समस्ते बजेट को भूरी भूरी प्रशंसा करें निश्चित भाव में आम यशस्वी प्रधानमंत्री आउ फाइनान्स मिनिस्टर दी जन को आम कांग्रेस निंदा करवाशीष भैया प्रशंसा करेंगे 12 लाख पर्यंत टैक्स छाड़ मिलला शुणु ये राधा माधव बाबू तक प्रश्न संदर्भ में सी भल कथाटी भी पचारि आपण पूर्व कथा आपण कथा मिसेक एकाथरे कहूँ उत्तर जे आपण उभय भी फोकस दौरान निम्न मध्यवित्त कथा ये कारण आमर भारत में बर्तमान निम्न मध्यवित्त कथा जब चिंता करें 80 कोटी ऊर्ध्व होती निम्न मध्यवित्त परिवार बा लोक परिवार तो नहीं लोक तेणु एमान विषय कौन करा जो निम्न मध्यवित्त व्यक्ति जनक से चाहूला जे एटी केमती आज तांकरी पई जेतेबेले इन्फ्लेशन रेट जेमती हमर बढ़ुची मुद्रास्फीति हार जे केमिति याकू केमती रोका जाई परिबो एवं से निम्न मध्यवित्त परिवार व्यक्ति जनक बा ता परिवार गोटे पाठुआ पिला से केपली
अर्धशिक्षित बा शिक्षित व्यक्ति केमिति चाकरी पाई परियो कारण तांको परिवार को इनकमटा आसीबा दरकार मूल वस्तु होची मूल कथा होची वस्तु पैसा बंचिबो से अधिक किणाकिड़ी करिवो पैसा रोटेट हबो तो केमिति बंचिलानी बोली आपण कहबे केमिति बंचिबा सेही कथा को आसुची बंचिबा पाई इनकम कर दरकार मासको लाख टका इनकम करूची से जदी टैक्स देबो नाही एवं ताकू बरंग 80,000 टका बेनिफिट मिलुची ताली ये लाभ केमिति नय सर नहीं वर्तमान कथा होची ये होची उच्च मध्यवित्त कथा आपण जहा कहले जे 12 लाख पर्यंत इनकम जार रहउची से 12 लाख पर्यंत इनकम रे ये बेनिफिट नबो किंतु आपण मूल कथा होची 12 लाख पर्यंत जार इनकम नाही जो माने या द्वारा शिकार होउचंती कथा होची या कोई नहीं कि हम एनालिसिस को आगु बढ़ेबा किंतु एक ब्रेक पाडे दे सर ब्रेक पर And as a result, the income tax simplification, which I announced in July, is already completed in its works, and we shall bring the bill in the next week. So the income tax simplification, about which in July budget I have gone in detail to say, the work is completed within 6 months is what I said. Within 6 months we brought the bill. It will be coming into the parliament next week. So if we are talking of reform inclusive of taxation, the work is done. This budget also speaks about rationalization in customs. Tariffs are being brought down, tariffs are being simplified, and also the basket which consisted of so many different tariffs for so many different commodities are now reduced. 8 were taken off earlier, 8 has been taken off now. So whatever remains now, 7 I think remains, and that is all about India's tariff picture. So the usual narrative which goes on, saying is India being too heavy on tariffs? No, you find that we've drastically reduced and also simplified. So this budget has so many things for all of us to talk about. The more important thing about agriculture, which performed very well during COVID and which has contributed to India's food security, the proposals which are mentioned in this budget actually talk about everything to do with beads to bazaar, literally from the stage of seeds, hybrid seeds, climate resilient seeds, seeds which can give greater output, seeds which are going to be high yielding, all this together to the final point of India becoming the world's food basket. That's the definition I put in when I was talking about Vikasit Bharat. So we are making lower middle class को पाइन कौन अच्छा से जगह रे चाषी को मध्य देइछंती से जगह रे एमएसएमई ऊपर अधिक गुरुत्व दिया जायछि तार अर्थ ये अधिक नियुक्ति रो सुयोग सृष्टि करिवो स्टार्टअप ऊपर गुरुत्व दिया जायछि आपण ताकू भी तारीफ करिवेनी नहीं शुणु मु गोटे कथा एमएसएमई उपर जो गुरुत्व देइछंती मु निश्चित भाव में कहूची ये गोटे भल पदक्षेप कारण जो गोटे भल होइछि मु ताकू प्रशंसा करी कारण एमएसएमई होउची देशर वर्तमान गोटे अर्थनीतिर मेरुदंड मुख्य मेरुदंड जमी कृषि सेमती एमएसएमई से भली प्रकार कारण एमएसएमई अनेक प्रकल्प बा अनेक प्रोजेक्ट रोचे जहाँकि सीधा सड़क कृषि सहित संलग्न रोचे तेणु ये उभय को जदि आपण जदि गोटे विकासर दुईटी चक भाव में नवा चाहिए निश्चित भाव में एमएसएमई को गुरुत्व देवा पड़ो कि मुझे जो कथाटा कहती जे टैक्स या नहीं जो अधिक खुशी होचे कथा होचे आम ओडिया रे गोटे प्रचलित कथा अच्छी जे गच्छरे बेलटीए पाचिले काउर किछि लाभ न थाए ये सिना हलदिया बेल देखा सुंदर देखा किंतु काउ ता देरु खुंपाए ता थंटरे मारी परियो काई कहूची काई कहूची जे 12 लाख इनकम मोर 12 लाख इनकम हला मु खुशी कहीं मु 12 लाख इनकम 12 लाख पर्यंत 12 लाख बेंड हो पुणी मुझे असुविधार पड़ जाऊँगी किंतु 12 लाख पर्यंत है मुझे ठीक अच्छी किंतु आपणकर 3 लाख इनकम आपण केमती खुशी हे से वर्तमान कथा होची जे आपणकर एठी होची जो माने निम्न मध्यवित्त से मानकर घरे बेकार पिला बुलूची किंतु ताकू चाकरी नहीं बा कर्म नियुक्ति नहीं द्वितीय कथा होची सीए प्रत्यक्ष भाव में हो बा परोक्ष भाव में होची आपणकर जीएसटी एवं अन्य एक्साइज टैक्स दे देकी तार दिन कटुची एवं बाजार को आज जितेबाला सी बैगटे नहीं जाऊँगी परिवापत्र बा दुकान सौदा आने बर्तमान तार हाथ थरुची तेणु मो कहवा कथा बर्तमान या केमती रोका जाए पार ये हूँ बड़ कथा ये आम कहबानी से लोकटा खुशी निवेशकों को फायदा कहुच्छी चाषी पाखापाखि 5 लाख पर्यंत कौटी ना कौटी ये सुविधा ऋण उपरे किसान क्रेडिट कार्ड 5 लाख को वृद्धि करा जायछि सेपटे अन्य एक कथा आपण देखंतु जे कौटी ना कौटी
जो एसएचजी महिला आप जिते गाँ कथा उठाउछन्ती एसएचजी ग्रामीण क्रेडिट कार्ड रो व्यवस्था करा जायछि तो ये सब कौन ग्रामांचल रे नियुक्तिर सुजोग सृष्टि करबा नाही कि नहीं आसूची से कथा एवं आपण जति डाटा रखिथिबे ताले अर्बान ठू ग्रामीण अंचल रे नियुक्ति बेसी आपण कम से कम जानथिबे जे बेकारी बेसी बरंग अर्बान रे एवं ग्रामीण रे ताहा कम से हार नहीं ग्रामीण नियुक्ति माने कण अर्बान ने जतल बेकारी हार बढ़ुची बर्तमान ग्रामीण रे बेकारी हार जे कमी जाई सेटा को हमें कहबानी ग्रामीण रे गोटे कथा होची किछि ग्रामीण अर्थनीति रे संश्लिष्ट होचंती किछि युवक किछि मात्रा रे जे बळी से माने कृषि क्षेत्र और अन्य आनुषंगिक क्षेत्र रे सेठी छोट मोट नियुक्ति पाइछन जहा तांकर दिन आजिका जो भली प्रकार दरदाम वृद्धिर जुग आसी तादेर सी अभाव को मेन्टोई पारुनी अभाव को पूरण कर पारुनी आपण एठी गोटे कथा कहबे जे एठी मु देखुथली जे हमर कहा जाउची जे आईआईटी बर्तमान आईआईटी रे 5000 समथिंग सीट संख्या बर्तमान बढ़ी बर्तमान मु गोटे कथा आपन को कहूची जे एई गत वर्षर जहाँ आपणकर आमर रिपोर्ट जे आईआईटी रे दिल्ली आईआईटी हो कि मुंबई आईआईटी दिल्ली आईआईटी रे वर्तमान पाखापाखि 42% युवक जो माने छात्र पास आउट होती फाइनाल ईयर छात्र से माने बेकार होती अच्छा मुंबई रे तार परिमाण वर्तमान हूँ 29% कलिकतार बेसी बेले अच्छी अन्य आड़े अच्छी तेणु कथा हूँ ये आईआईटी सीट बढ़ाई देले कौन हम से माने पास करके पुणी बेकार हे तेणु जी लोक बाहर जो क्वालिटी एजुकेशन बा क्वालिटी ह्यूमन रिसोर्स आमको दरकार गोटे क्वालिटी माने वी बिलीव इन वी शुड बिलीव इन क्वालिटी नॉट क्वांटिटी तो क्वालिटी जदि ह्यूमन रिसोर्स जनरेट 50 वर्ष पे राज्य गुडी को शुद्ध ऋण शुद्ध मुक्त ऋण प्रदान करा जिवो सेतेबेले राज्य मध्ये विभिन्न योजना रे आकु ये पैसा को मध्ये लगाइबो जा ऋण आकार पाइबो एवं सेतरे भी नियुक्तिर सुजोग सृष्टि हेबो अन्य पटे आपण देखंतु जे जेतेबेले आमे आपण कहउछन जे एमएसएमई को प्राधान्य दिया जायछि तो सबुठ अधिक एम्प्लॉयमेंट तो एमएसएमई ही क्रिएट करे कोठी ना कोठी सेटा तो निश्चय हमें देखिबा एवं जदि ताले अपर पक्षे आपण एया कहबेनी कि नियुक्ति ही सुजोग सृष्टि करे जाउछि एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करिवो सेटा क्वालिटी एम्प्लॉयमेंट हबो कारण एई जो एमएसएमई रो जो ढांचाटा करा जाउछि ता देरे बड़ बड़ इंडस्ट्री के सहित तांकर लिंकेज हेकिरी से माने तार जो क्वालिटी एम्प्लॉयमेंट हबो जो जोटा कि रिजनेबली पेड सेटा जदि हे गला ताले जो आमर देवाशीष जो आशंका रही है लोक मान कम इनकम हम सो इनकम बढ़ सेमती चाष क्षेत्र टूरिज्म फोकस करा जाउछि ता भी नियुक्तिर सुजोग हाँ ये तो ठीक भाव में इठी गोटे कथा मैंने देखुवे शीत भूया जो भाव में आप देखुवे जे गोटे प्रकार कहुई जे जो अनुसूचित जाति जनजाति और महिला एमान बिना मॉर्गेज लोन व्यवस्था ये भी तो निहाती भाव में उन्नति करिवो ना खाली सहीटा ना आउ गोटे भी अच्छी जे 5 लाख जनजाति महिला एंटरप्रेन्योरशिप करा ता देरे जदि आपण ओडिशा परिप्रेक्षी रे कहबे देखो ओडिशा रे 22% हला जनजाति तेणु बर्तमान किए को स्टेट बेसी बेनिफिटेड आमे बेनिफिटेड हवा बेसी सेमती जो अच्छी कृषि उपर जो करा जायछि जे 100टी लो प्रोडक्टिविटी डिस्ट्रिक्ट को लेकर सेठी जो सब सर्वांगीन उन्नति करा आफ्टर आस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट जो प्रोग्रामटा सक्सेसफुल होगा पर तेणु सेठी ओडिशा बेनिफिटेड हो कारण आप जानते जो ओडिशार जो प्रोडक्टिविटी एग्रीकल्चर रे सेटा नेशनल हार ठू रेट ठू कम तेणुक जो 100टी जो डिस्ट्रिक्ट हम तादर अनेक डिस्ट्रिक्ट ओडिशार पड़ो तेणु ओडिशार भी पुणी टूरिज्म रे कहछन से माने मॉडिफाइड उड़ान स्कीम जो थे कि विभिन्न रिमोट एरिया गुड़ा को हेलिकॉप्टर सहित संयोग कर ओडिशार टूरिज्म आम बर्तमान बड़ आकार प्रमोट करा ओडिशा अनेक सुविधा सेमती एठी आमर डेस्टिनेशन टूरिज्म आग्रो टूरिज्म जोटा को से इंट्रोड्यूस कर नुआ कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस होती से सब ओडिशा को बेनिफिटेड हम आउ देवाशीष बाबूर जो शंका रही लोक मान इनकम टा बर्तमान जो स्तर अच्छी से स्तर से कौन बेनिफिट इनकम बढ़ो आउ निश्चित भाव से बेनिफिटेड है पाखक मुझे जिते सी कहते जे नियुक्ति सुजोग सृष्टि करने कौन करा जितेबले एससी एसटी महिला उद्योगी तैयारी करने चेष्टा एंटरप्रेन्योर सृष्टि करने चेष्टा कर स्वागत केमती करेंगे ओके श्रीयुक्त संदीप मिश्र मुझे सर आसिया चाहिए जे सरप्राइज मास्टर जे एभली बंपर प्राइज देबे ता बहुत हुए आशा करा जाउ नथिला जोटी 10 लाख कुआ जाउतला सेठी एकदम 12 लाख को टैक्स जड़ित रिहाती तो आम आदमी ये बजेट की आपने या कहिबे
देखंतु अर्थमंत्री चेष्टा करिसंती विभिन्न सेक्टर को केमती बैलेंस करिवे आपण जो कथाटी कहूची इनकम टैक्स रे जो रियाती देइचंती सेटा मिडिल क्लास को दृष्टि रे रखी करा जायची कारण भारत वर्षर प्राय 31% लोक मिडिल क्लास रो गत किछि वर्ष हला मिडिल क्लास गोटे ओवरबर्डन गोटे चापग्रस्त होउतिले टैक्स सबुआडू बढ़ुची ताकर जो भलिया रोजगार बढ़िया कथा से भलिया मिडिल क्लास रो रोजगार बढ़ू नाही ता संगे इन्फ्लेशन रेट सबुले तांको ऊपर चाप रहउची खास करी फूड इन्फ्लेशन टा लोक मानकर जो हाउस होल्ड रो जो एक्सपेंडिचर थाए सेटा को प्रभावित करूची आ गोटे बड़ एबे आशंका आसुची जेतु टेक्नोलॉजी एआई रो गोटे व्यापक व्यवहार हवा आरंभ हेलानी सेति में अनेक लोक आशंका करूचंती हुए तो तांकर नियुक्तिर सुजोग बाधा प्राप्त हबो चाकरी हरेबे सेति मिडिल क्लास रो जो गोटे अनिश्चितता मिडिल क्लास भितर रहउची सेटा आपण देखंतु 2024 निर्वाचन रे भी प्रभाव पकेला आ भारतीय जनता पार्टी जे कि मिडिल क्लास रो वोट भल पाती किंतु 2024 रे तांकर सीट संख्या कमी गला आ 240 लोकसभा रे आसन भारतीय जनता पार्टी जीतिला जेबेटू 2024 निर्वाचन सरीची सेतेबेले उठू आशा करा जाउतिला कि मोदी सरकार तांकर ए तृतीय पाळी रे मिडिल क्लास पई किछि रियाती आनिबे किछि बड़ घोषणा करिवे आज सेटा अर्थमंत्री इनकम टैक्स रे किछि रियाती देइचंती जोटा मिडिल क्लास हाथ रे अधिक अर्थ आसीबो जो डोमेस्टिक कंजम्पशन रो जो ट्रेंड ता गत किछि वर्ष हला अछि खास करी एई फाइनेंशियल रो गत किछि क्वार्टर रे जो डोमेस्टिक कंजम्पशन रो जो गोटे स्लो डाउन हेइची आपनको जीडीपी रे गोटे स्लो डाउन हेइची सेथरे गोटे चेष्टा करा जाउची केमती कंज्यूमर स्पेंड ता बढ़ा जिवो मिडिल क्लास हाथ रे अधिक पैसा रहले तांकर परचेजिंग पावर ता बढ़िबो आ कंज्यूमर स्पेंड हेले सेटा अर्थनीति को गोटे बूस्ट दबो एटा गोटे दिग आउटे दिग आपण जानिचंती दिल्ली रे निर्वाचन आगु को अछि फेब्रुआरी 5 रे वोट पड़िबो सेठी भी मिडिल क्लास वोट ऊपर भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी भितर गोटे संघर्ष चलीची सेति पई मिडिल क्लास वोट को भी दिल्ली रे प्रभावित करिवार एटा भी गोटे दिग अछि ता छडा सबटू बड़ आह्वान जोटा अर्थमंत्री का पाखरे अछि आपण ग्रोथ आउ इनइक्वालिटी को केमती बैलेंस करिवे सबु बेले जतले बजेट जने अर्थमंत्री प्रेजेंट करूचंती सेतेबेले आपनकर अभिवृद्धिर आवश्यकता अछि ता संगे संगे भारत वर्ष रे जो असमानता अछि सेटा को आपण केमती दूरीकरण पई कोन पदक्षेप नै परिवे ता ऊपर गोटे बड़ चैलेंज थाए सेति पई अर्थमंत्री से दिगरे केमिति ग्रोथ रहिबो किंतु आपण एक्सपेंडिचर बहुत न बढ़े कि केमती ग्रोथ रहि परिबो विभिन्न सेक्टर रे सेति पई चेष्टा करिचंती कारण जो प्रधानमंत्री जो गोटे 5 ट्रिलियन इकोनॉमी कथा कहउचंती 2027 सुधा हमें जदि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी रे परिणत हबो भारत वर्ष ताले विश्वर तृतीय सर्वबृहत अर्थनीति भाबरे भारत वर्ष अमेरिका और चाइना परे थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी वर्ल्ड रो हबो सेति पई चेष्टा करा जाउची 2047 बेलू आपन को 30 ट्रिलियन इकोनॉमी रे जदि भारत वर्ष पहुंची पारिबो ताले हमें विकसित भारत रो जो स्वप्न देखुचे सेटा हमें पूर्ण कर परिबो सेई जो रेट ऑफ ग्रोथ आपण 9 to 10% भितर जदि रेट ऑफ ग्रोथ रहिबो ताले भारत वर्ष सेई भलिया गोटे स्वप्न पूर्ण कर परिबो किंतु गत किछि क्वार्टर हला हमर सेई भलिया ग्रोथ रेट रहउनी गत काली भी जो आपनकर इकोनॉमिक सर्वे प्रेजेंट करा गला अराउंड 6% ग्रोथ रेट देखा जाउची से लगी आपण कंसिस्टेंटली जदि 8 रु अधिक न रहिबे सेई भलिया गोटे स्वप्न हमें पूर्ण करबा डिफिकल्ट से लगी अर्थमंत्री ए जो पदक्षेप नैचंते सबु दिगगुरा को दृष्टि रे रखिकी मिडिल क्लास को केमती ओवरबर्डन न करा जाए और मिडिल क्लास गोटे ग्रोथ इंजिन भाबरे कार्य करंती खास करिकी परचेजिंग पावर बढ़िले मिडिल क्लास सिटी पे करि परिबो सेति पई बाबूची इनकम टैक्स रा ए जो रिहाती दिया जायछि जो चेंजेस अणा जायछि एतरे 10 लाख आकलन करा जाउतला करा जो 12 लाख करके निहाती मिडिल क्लास पई गोटे निहाती एटा गोटे बड़ रिलीफ आसीछि ओके आ एक ब्रेक पर निर्देश आछि ब्रेक पर मध्य बजेट 25 को नै समीक्षा आगो बढ़ेबा अच्छा से जगह चाषी को से जगह एमएसएमई उपर अधिक गुरुत्व दि जाए तार अर्थ ये अधिक नियुक्ति सुजोग सृष्टि कर स्टार्टअप उपर गुरुत्व दि जाए आपन ताकू भी तारीफ करेंगे
नहीं शुणु मु गोटे कथा एमएसएमई उपर जो गुरुत्व देते मुझे निश्चित भाव में कहूँ ये गोटे भल पदक्षेप कारण जो गोटे भल होती कारण एमएसएमई हूँ देशर वर्तमान गोटे अर्थनीतिर मेरुदंड मुख्य मेरुदंड जमी कृषि सेमती एमएसएमई से भली प्रकार कारण एमएसएमई अनेक प्रकल्प बा अनेक प्रोजेक्ट रोचे जहाँकि सीधा सड़क कृषि सहित संलग्न रोचे तेणु ये उभय को जदि आपण जदि गोटे विकासर दुईटी चक भाव में नवा चाहिए निश्चित भाव में एमएसएमई को गुरुत्व देवा पड़ो कि मुझे जो कथाटा कहती टैक्स या नहीं आम जो अधिक खुशी होचे कथा होचे आम ओडिया रे गोटे प्रचलित कथा अच्छी जे गच्छरे बेलटीए पाचिले काउर किछि लाभ न थाए ये सिना हलदिया बेल देखा सुंदर देखा किंतु काउ ता देरु खुंपाए खंटर मारी परिबो काहे कहूची जे 12 लाख इनकम मोर 12 लाख इनकम हला मु खुशी कहीं मु 12 लाख इनकम 12 लाख पर्यंत 12 लाख बेंड हो पुणी मु असुविधार पड़ जाऊँ कि 12 लाख पर्यंत है मु ठीक अच्छी कि आपणकर 3 लाख इनकम आपड़ केमती खुशी हे से बर्तमान कथा होची आपणकर एठी होची जो माने निम्न मध्यवित्त से मानकर घरे बेकार पिला बुलूची किंतु ताकू चाकरी नहीं बा कर्म नियुक्ति नहीं द्वितीय कथा होची सी प्रत्यक्ष भाव में हो बा परोक्ष भाव में होची आपणकर जीएसटी एवं अन्य एक्साइज टैक्स दे देकी तार दिन कटुची एवं बाजार को आज जितेबाला सी बैगटे नहीं जाऊँगी परिबा पत्र बा दुकान सौदा आने बर्तमान तार हाथ थरुची तेणु मो कहवा कथा बर्तमान या केमती रोक जापर ये हूँ बड़ कथा ये आम कहबानी से लोकटा खुशी निवेशकों को फायदा कहुच्छी चाषी पाखापाखि 5 लाख पर्यंत कौटि ना कौटि ये सुविधा ऋण उपरे किसान क्रेडिट कार्ड 5 लाख को वृद्धि करा जायछि सेपटे अन्य एक कथा आपण देखंतु जे कौटि ना कौटि जो एसएचजी महिला आपण जते गाँ कथा उठाउछन्ती एसएचजी को पई ग्रामीण क्रेडिट कार्ड रो व्यवस्था करा जायछि तो ये सब कोन ग्रामांचल रे नियुक्तिर सुयोग सृष्टि करबा नाही कि नहीं से कथा एवं आपण जति डाटा रखिथिबे ताले अर्बान ठू ग्रामीण अंचल रे नियुक्ति बेसी आपण कम से कम जानथिबे जे बेकारी बेसी बरंग अर्बान रे एवं ग्रामीण रे ता कम से हार नहीं ग्रामीण नियुक्ति माने कण अर्बान ने जतल बेकारी हार बढ़ुची बर्तमान ग्रामीण रे बेकारी हार जे कमी जायछि सेटा को हमें कहबानी ग्रामीण रे गोटे कथा होची किछि ग्रामीण अर्थनीति रे संश्लिष्ट होचंती किछि युवक किछि मात्रा रे जेबळी से माने कृषि क्षेत्र और अन्य आनुषंगिक क्षेत्र से छोट मोट नियुक्ति पाइछन जहाँ तांकर दिन आजिका जो भली प्रकार दरदाम वृद्धि जुग आसी तादेह सी अभाव को मेन्टोई पारुनी अभाव को पूरण कर पारुनी आपण एठी गोटे कथा कहबे जे एठी मु देखुथली जे हमर कुआ जाउची जे आईआईटी बर्तमान आईआईटी रे 5000 समथिंग सीट संख्या बर्तमान बढ़ी बर्तमान मु गोटे कथा आपन कहूची जे एई गत वर्षर जहाँ आपणकर आमर रिपोर्ट जे आईआईटी रे दिल्ली आईआईटी हो कि मुंबई आईआईटी दिल्ली आईआईटी रे वर्तमान पाखापाखि 42% युवक जो माने छात्र पास आउट होती फाइनाल इयर छात्र से माने बेकार होती अच्छा मुंबई रे तार परिमाण वर्तमान होची 29% कलिकतार बेसी बेले अच्छी अन्य आड़े अच्छी तेणु कथा होची एटी आईआईटी सीट बढ़ाई देले कौन हम से माने पास करके पुणी बेकार होइकी हेबे तेणु जेतिकी लोक बाहर जो क्वालिटी एजुकेशन बा क्वालिटी ह्यूमन रिसोर्स आमको दरकार गोटे क्वालिटी माने वी शुड बिलीव इन क्वालिटी नॉट क्वांटिटी तो क्वालिटी जदि ह्यूमन रिसोर्स जनरेट टका किसान क्रेडिट कार्ड रे वर्तमान ताको 5 लाख रे सरकार पहुंची तेणु ए बजेट रे निश्चित भाव चाषी उपकृत हम जो आपणकर रहा लिथियम बैटेरी हो बा लेदर उपरे हो बा इलेक्ट्रोनिक्स उपरे हो जो छुटकारा मिली लोक मान बहुत राहत मिली आउ द्वितीय कथा है या भितर आप जो रोचे टैक्स टैक्स जो 12 लाख रोला 12 लाख पर्यंत जो आम दौलू मध्यवित्त परिवार जो मैंने लोकों जो गोटे विराट गोटे बोझ होता जहाँ 12 लाख पर्यंत जो टैक्स छुटकारा मिलला से बहुत खुशी अच्छु आउ ये बजेट उपर बहुत खुशी अच्छु आज जो बजेट घोषणा है आमर बहुत आम केन्द्र जे जो बजेट किसान क्रेडिट कार्ड जो 5 लाख बंद ऋण छाड़ आमर 12 लाख टका बंद जीएसटी सेटा भी पड़ोनी आहरी गर्व आमर जो जो जिनस जो आमर टीवी फ्रिज आमर इलेक्ट्रिक गाड़ी जान यही सब सस्ता आउ जिनस जहाँ भी अच्छी भल बजेट भी भल देखु ये बजेट पर बहुत दिन प्रतीक्षा थिला जे समस्ते आम आशा करूँ कि भाव में बजेट लोक हो जहाँ प्राथमिक ये देखा बहुत फ्रेंडली बजेट है
जो थे यूथ मान को महिला मान को कृषि को प्राधान्य दिखाई तो निश्चित भाव में यहाँ गोटे स्वागत योग्य बजेट बोली निश्चय कहि किंतु या दु तीन पॉइंट मोर कहबार अच्छी नंबर वन है जो मैंने टैक्स हायर टैक्स पेयर अच्छा किसी इनसेंटिव्स व्यवस्था रहा दरकार ना लोक टैक्स देवाई पछौंट माध्यमिक शिक्षा व्यवस्था 3 वर्ष मध्य पिला जो इंटरनेट व्यवस्था करिसेंती शिक्षा व्यवस्था ये हूँ गोटे जुगान्तकारी पदक्षेप एवं सर्वोपरि अंगनवाड़ी शिशु मानक पोषण 2 योजना माध्यम 8 कोटी ऊर्ध्व जो शिशु उपकृत हेबे सारा भारत वर्ष ये हूँ जुगान्तकारी पदक्षेप सरकार जो 12 लाख छाड़ एक स्वागत योग्य पदक्षेप एक ऐतिहासिक राय बोली कह आम भी से आशा करूँ सरकार पाखु कहीं यह द्वारा आम जो 7 लाख पर्यंत जो सरकार करते भी स्वल्प वेतन भोगी जो मैंने रही आम भली कर्मचारी कि व्यवसायी हेले समस्ते से टैक्स देवाक पड़ता टैक्स व्यतीत आम जो टैक्स भरवा पड़ूला से क्या गोटे एडवोकेट को धरवा पड़ता एवं पुणी रिटर्न फाइल कला सेमती करने पड़ता जहाँफल आम बहुत हैरान होती तेणुक बर्तमान 12 लाख जो सरकार करते बोधे भावुची आमको बिल्कुल टैक्स पड़ो ना। श्रेष्ठ भारत निर्माण पाई नरेंद्र मोदी जी परिकल्पना को अष्टम थर पाई बजेट उपस्थापित करिसेंती निर्मला सीतारमण जी अर्थमंत्री। बजेट्र सबुठु बड़ कथा है जे 8% रु अधिक अभिवृद्धि सुनिश्चित करने दिगरे बजेट समर्पित अछि। सबुठु बड़ कथा है ए बजेट साधारण जनता गरीब मध्यवित्त श्रेणी पाई समर्पित अछि। 12 लाख टंका पर्यंत टैक्स छाड़ सीमा बढ़िबा यह साधारण देशवासी को आनंदित करिछि। जाऊ अनेक वर्ष है लोक अपेक्षा करते मध्यम श्रेणी लोक बेसी खुशी होता तो 7 लाख थिला बर्तमान आउ 5 लाख बढ़ी सरकार करते आहरी खुशी अच्छु आम जो इनकम टैक्स रिजाइम टाकू परिवर्तन करवा टैक्स छाड़ करवा 12 लाख टंका पर्यंत ये गोटे कथा ता सहित ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ताकू तार सूचकांक को आहरी सुंदर भाव में करवा ताकू एवं गोटे वर्ल्ड पृथ्वी रे तार रैंकिंग भल भाव करने ये बजेट रे प्रोविजन अच्छी तत्सहित इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म एंड रेगुलेशन एवं आहरी अनेक जिनिस जहाँकि अल्प समय भितर कही हम ना ताहा प्रेजेंट कराई बजेट रे। कैंसर भली दुरारोग्य अनेक दुरारोग्य रोगर मेडिसिन गुड़ा बहुत सस्ता कर देचंती सेटा बहुत स्वागत जो कना मध्यवित्त परिवार से रोग पाई ही बहुत कष्ट पाती अन्य जिनस समस्ते मैनेज करनियंती सब जिनस चलई नियंती किंतु रोगटा को तो कहीं मैनेज करि परिबेनी तो रोग पाई सेटा बहुत भल पदक्षेप स्वागत योग्य पदक्षेप किंतु आउ टिके भल होई थांदा गृहिणी माने जो माने समाज रे समस्ते सब आड़े जाउचंती गृहिणी माने ही घर चलाउचंती तो सब किछि नै कि गृहिणी मान को नै कि ही समाज तो सेटा टिके जदि सस्ता किसी जिनस होता गृहिणी मान को घर चलबार टिके सुविधा होता जो केतोटे प्रोडक्ट्स अच्छी जोड़ा कि तुम आपंकर हार्मफुल टू द सोसाइटी प्लास्टिक प्रोडक्ट्स यह सब कॉस्टली हम तेणु मोटामोटी भाव यूनियन बजेट इट विल बी बेनिफिशियल टू एवरी सेक्टर्स ऑफ द सोसाइटी समस्ते उपकृत हेबे तेणु इट इज वेरी गुड बजेट। Our government will now launch a 6-year mission for Atmanirbharta. तेबे जहाँ आप शुणुले जो गुड़ी भाव ये विभिन्न लोकों प्रतिक्रिया विभिन्न सेक्टर प्रतिक्रिया एक भल बजेट एक संतुलन बजेट और सबुठ बड़ कथा जो भाई भाव 2-3 वर्ष हे लोके आशा रखिते टैक्स स्लैब रे परिवर्तन हो टैक्स स्लैब को बढ़ा जाऊ रिहाती आश्वस्ति दि जाऊ 10 लाख पर्यंत 10 नुहे 12 लाख पर्यंत ताहा रिहाती मिला किंतु बड़ कथा होउछि साधारण लोक मानक भितर मध्ये हम ये प्रतिक्रिया देखुतले जे जो कैंसर मेडिसिन रे जोटा दर ह्रास पाइबो आकु नै कि भी रहिछला उत्कंठा जे मेडिसिन किनिबा पई तांको पई होय तो से माने किनी पारु नथिले किंतु वर्तमान समय सेटा उपयोग हो पारिबो से मानकु आ जो स्लैब कथा आपण कहतले से स्लैब नै कि भी से माने कारण आगुरु जहा थिला वर्तमान जेतु बढ़ीची आय ऊपर जो टैक्सटा फ्री करा जाइछि 12 लाख पर्यंत ताकु मध्ये नै कि हम देखुतले प्रतिक्रिया तो
जदि देखा गोटे उत्कंठा जहाँ थिला से अनुसार से माने खुशी व्यक्त करछन्ती नियति भाव मु पुणी थे जावाक चाहिए श्री तपन चांद आपण पाखु किंतु पूर्व ओके ब्रेक पाई निर्देश आछी ब्रेक पर आम आलोचना को आगू बढ़ावा। स्टार्टअप देइछि रोजगार होइछन्ति आत्मनिर्भर। कला कारीगरी तांको परिचय तालपत्ररु तयारी अलंकार। किसान क्रेडिट कार्ड रे वर्तमान ताको 5 लाख रे सरकार पहुंचैछन्ति तेणु ए बजेट रे निश्चित भाव चाषी मध्य उपकृत होबो। जो आपनकर रहिला अछि लिथियम बैटरी हो बा लेदर उपरे हो बा इलेक्ट्रोनिक्स उपरे हो जो छुटकारा मिली लोक मान बहुत राहत मिली। आ द्वितीय कथा है या भर आप जो रोचे टैक्स टैक्स जो 12 लाख रोला 12 लाख पर्यंत जो आम दौलू मध्यमित परिवार जो मैंने लोकों जो गोटे विराट गोटे बोझ होता जहाँ 12 लाख पर्यंत जो टैक्स छुटकारा मिलला से बहुत खुशी अच्छु। आ ये बजेट उपर बहुत खुशी अच्छु। आज जो बजेट घोषणा है आमर बहुत आम केन्द्र जे जो बजेट किसान क्रेडिट कार्ड जो 5 लाख बंद ऋण छाड़ आमर 12 लाख टका बंद जीएसटी सेटा भी पड़ोनी आहरी गर्व आमर जो जिनस जो आम टीवी फ्रिज आमर इलेक्ट्रिक गाड़ी जान यही सब सस्ता आउ जिनस जहाँ भी अच्छी भल बजेट भी भल हो देखंतु ये बजेट पर बहुत दिन प्रतीक्षा थिला जे समस्त आम आशा करूँ जे किभली भाव बजेट लोक हो आउ जहाँ प्राथमिक ये देखा जाता बहुत फ्रेंडली बजेट होती जो थे यूथ मान को महिला मान को कृषि को प्राधान्य दिखाई तो निश्चित भाव में यहाँ गोटे स्वागत योग्य बजेट बोली निश्चय कहि किंतु या 2-3टा पॉइंट मोर कहबार अच्छी। नंबर 1 है जो मैंने टैक्स हायर टैक्स पेयर अच्छा किसी इनसेंटिव्स व्यवस्था रहा दरकार ना लोक टैक्स देवाई पछौंती। माध्यमिक शिक्षा व्यवस्था 3 वर्ष मध्य पिला जो इंटरनेट व्यवस्था करिसेंती शिक्षा व्यवस्था ये हूँ गोटे जुगान्तकारी पदक्षेप एवं सर्वोपरि अंगनवाड़ी शिशु मानक पोषण 2 योजना माध्यम 8 कोटी ऊर्ध्व तो शिशुओं उपकृत हेबे सारा भारत वर्ष ये हूँ जुगान्तकारी पदक्षेप। सरकार जो 12 लाख छाड़ एक स्वागत योग्य पदक्षेप एक ऐतिहासिक राय बोली कह आम भी से आशा करूँ सरकार पाखु कहीं यह द्वारा आम जो 7 लाख पर्यंत जो सरकार करते भी स्वल्प वेतन भोगी जो मैंने रही आम भली कर्मचारी कि व्यवसायी हेले समस्ते से टैक्स देवाक पड़ता। टैक्स व्यतीत आमको जो टैक्स भरवा पड़ता से क्या गोटे एडवोकेट को धरवा पड़ता एवं पुणी रिटर्न फाइल कला सेमती करने पड़ता जहाँफल आम बहुत हैरान होलु। तेणुक बर्तमान 12 लाख जो सरकार कर बोधे भावुची आमको बिल्कुल टैक्स पड़ो ना। श्रेष्ठ भारत निर्माण पाई नरेंद्र मोदी जी परिकल्पना को अष्टम थर पाई बजेट उपस्थापित करिसेंती निर्मला सीतारमण जी अर्थमंत्री। बजेट्र सबुठु बड़ कथा है जे 8% रु अधिक अभिवृद्धि सुनिश्चित करने दिगरे बजेट समर्पित अछि। सबुठु बड़ कथा है ए बजेट साधारण जनता गरीब मध्यवित्त श्रेणी पाई समर्पित अछि। 12 लाख टंका पर्यंत टैक्स छाड़ सीमा बढ़िबा यह साधारण देशवासी को आनंदित करिछि। जहाँ अनेक वर्ष है लोक अपेक्षा करते मध्यम श्रेणी लोक बेसी खुशी होता तो 7 लाख थिला बर्तमान आउ 5 लाख बढ़ी सरकार कर आहरी खुशी आम जो इनकम टैक्स रिजाइम टाकू परिवर्तन करवा और टैक्स छाड़ करवा 12 लाख टंका पर्यंत ये गोटे कथा ता सहित ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ताकू तार सूचकांक को आहरी सुंदर भाव करवा एवं ताकू एवं गोटे वर्ल्ड पृथ्वी रे तार रैंकिंग भल भाव करने ये बजेट रे प्रोविजन अच्छी तत्सहित इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट
बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म एंड रेगुलेशन एवं आहरी अनेक जिनिस जहाँकि अल्प समय भितर कही हम ना ताहा प्रेजेंट कराई बजेट रे कैंसर भली दुरारोग्य अनेक दुरारोग्य रोगर मेडिसिन गुड़ा बहुत सस्ता कर देचंती सेटा बहुत स्वागत जो कारण मध्यवित्त परिवार से रोग पे ही बहुत कष्ट पाती अन्य जिनस समस्ते मैनेज करनियंती सब जिनस चलै नियंती किंतु रोगटा को तो कहीं मैनेज करि परिबेनी तो रोग पे सेटा बहुत भल पदक्षेप स्वागत योग्य पदक्षेप किंतु आउ टिके भल होई थांदा गृहिणी माने जो माने समाज रे समस्ते सब आडे जाउचंती गृहिणी माने ही घर चलाउचंती तो सब किछि नै कि गृहिणी माने को नै कि ही समाज तो सेटा टिके जदि सस्ता किछि जिंस हे थांदा गृहिणी मान को घर चलैबार टिके सुविधा हे थांदा जोडे जो केतोडे प्रोडक्ट्स अछि जेबा कि तमर आपनकर हार्मफुल टू द सोसाइटी प्लास्टिक प्रोडक्ट्स ए सब कॉस्टली हबो तेनु मोटामोटी भाबे यूनियन बजेट इट विल बी बेनिफिशियल टू एवरी सेक्टर्स ऑफ द सोसाइटी समस्त उपकृत हेबे तेनु इट इज वेरी गुड बजेट Our government will now launch a 6-year mission for Atmanirbharta. Trusted brand since 1948. देशर विकास सुनिश्चित करिब बजेट कहिले पीएम मोदी साधारण नागरिक संचय वृद्धि ग्रामीण अर्थनीतिर विकास समस्त आय वर्गर लोकंकु फायदा देव मध्यवित्त कर्मजीवी चाकरिया को लाभ देव ऐतिहासिक लोकंक बजेट कहिले पीएम साधारण बजेट रे मध्यवित्तों बड़ आश्वस्ति 12 लाख जाए आयकर छाड़ घोषणा कले अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण वेतनभोगी 12 लाख 75 हजार टंका पर्यंत आयकर छाड़ आसंता सप्ताह नुआ आयकर बिल आसवा नहीं अर्थमंत्री सूचना सस्ता हेबो लिथियम बैटेरी इलेक्ट्रिक यान में व्यवहृत बैटेरी उपरू कर ह्रास मोबाइल फोन बैटेरी चमड़ाजात द्रव्य एलईडी टीवी उपरू कर ह्रास नहीं घोषणा सस्ता हेबो विद्युतीकरण सामग्री महंगा हैला प्लास्टिक सामग्री बजेट रे स्वास्थ्य सेवा उपरे गुरुत्व सबु जिला हॉस्पिटल रहिबो कैंसर चिकित्सा केन्द्र आसंता 5 वर्ष मध्य 75 हजार मेडिकल सेट वृद्धि लक्ष्य 36 जीवन रक्षाकारी औषध उपरू कस्टम ड्यूटी संपूर्ण छाड़ 7.5 कोटी एमएसएमई कर्मचारी फोकस एमएसएमई क्षेत्र पर अधिक ऋण मंजूरी कर निष्पत्ति गठन हेबो नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन महिला उद्योगी नुआ योजना युवकों को एमएसएमई द्वारा अधिक नियुक्ति उपरे फोकस बजेट रे 10टी क्षेत्र को गुरुत्व कृषि धनधान्य योजना घोषणा कले अर्थमंत्री कम उत्पादन 100टी जिले में लागू किसान क्रेडिट कार्ड ऋण सीमा 5 लाख टंका को वृद्धि उपकृत हेबे 7.5 कोटी अधिक चाषी छत्तीसगढ़ में सुरक्षाकर्मी गुली टलिले 8 नक्सल बीजापुर गंगालूर थाना अंचल में थिबा जंगल में कम्बिंग बेले मुहांमुही होते पुलिस और नक्सल घटनास्थल में सर्च ऑपरेशन जोरदार पुलिस को लिफ्ट मागी फसिले डकात 8 अंतराज्य लुटेरा गिरफ्त 3 कोटी 51 लाख नगद जबत धर्मगढ़ में एक देशी मद भाटी लुट पर बुल पुलिस